All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. First the infant, mewling and puking in the nurse's arms, and the whining schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail unwillingly to school. And the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. कोई से आवाज मत करो यार। पैच पैनल निकाल दे और 2 डिमर 3 स्टैंड। डिमर वो कौन सा वाला निकालना है? पहले वाला? अभी नहीं, पहले वाला उसका वो टाइट किया था। नहीं वो लूज है अभी भी, तो वो दूसरा निकालते हैं। तो ब्लैक कलर के दोनों वो वाले। ब्लैक वाले निकाल ले और 2 प्रोफाइल निकाल ले। अच्छा यार सेटल डाउन हो जाओ। ठीक है ठीक है, ताली पे स्टार्ट करिए। रेशमा, सुंदर लड़कियां नीचे नहीं बैठती। तू जानती है ना तू कितनी सुंदर है। सच्ची? मुझे। अरे ओ डफली वाले भैया, जरा ताल तो देना। अरे लाठी की पावर है, बत्ती की ठाट है, जो लेता पंगा उसकी खड़ी कर दे खाट है। लाठी की पावर है, बत्ती की ठाट है, जो लेता पंगा उसकी खड़ी कर दे खाट है, 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 खड़ी कर दे खाट है। सबसे पहले तो मतलब कि जो प्लेयर्स लोग अक्सर इसको कि सिर्फ सोसाइटी की तरह नहीं मानते हैं या फिर सिर्फ एक थिएटर करने वाले लोगों की तरह नहीं मानते हैं। दे कंसिडर मतलब कि एक तरीके से स्पेस बोलते हैं इस चीज़ को, और वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपील करती है इस जगह की। It's not about being different or anything, but the only point is that if you consider a space to be limited to only one thing, that is theatre as an art or something, तुम ये सोच के जाओगे कि मुझे ये चीज़ करना है, then it'll start getting limited. When we come here thinking, yeah, obviously we'll be serious about theatre, but we have to be learning every aspect of it, around it, reading texts, discussing not only theatre in process but other issues that we pick up in our plays, because every time we do a play we try and make it our own rather than doing it in the way it has been written, and that gives you a kind of social responsibility of an artist, and that kind of responsibility comes in when we go on stage. After entering the society, you feel that it's not about just theatre, it's all about metamorphosis. मैं जब यहाँ पे आया था, ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई कि मेरे एक्टिंग के नोशंस बेसिकली सारे इन्फ्लुएंस थे जो मूवीज़ में देखता हूँ, जो बॉलीवुड वगैरह फालतू मूवीज़ हम देखते हैं, और अजीब से नोशंस थे एक्टिंग के बारे में। और यहाँ पे आके अपनी हॉबी नहीं, अपने पैशन तक को परस्यू करने के लिए उस पूरी चीज़ के नोशन सारे बदल गए। लहलहावे गगन, सरसरावे पवन, नीली पीली खेत की क्यारी में सरसों, और खेत के बीच में झोपड़िया, और झोपड़िया में बैठे कॉमरेड भाई की खोपड़िया, खोपड़िया, खोपड़िया में उठे रे सवाल, खोपड़िया में मचे रे बवाल। खोपड़िया में बैठे कॉमरेड भाई की खोपड़िया में उठे रे सवाल, झोपड़िया में बैठे कॉमरेड भाई की खोपड़िया में उठे रे सवाल, खोपड़िया में उठे रे सवाल, बंधु खोपड़िया में मचे रे बवाल, खोपड़िया में उठे रे सवाल, बंधु खोपड़िया में मचे रे बवाल। When it comes to politics and textuality, when it comes to, let's say, politics in terms of a play we do on labor,
And we have struggled with the students at that stage. This is very soon after the the incident with the workers being fired upon in the Honda factory at Manasa, etc., etc. This year we play on custodial violence. The one feeling we've got again and again telling the students, your place stinks of the middle class. It's got a whole smell of the middle class drawing room. You imagine the space completely from the insularity of your class position. I'm not getting the feeling of, it's difficult. How do I ask you to think like a rickshawala? It's difficult. It will be a pretend, let's pretend, and you will do it in the way in which a boy consciously takes off his Reeboks and says, oh look, main nange pair ho, kind of thing. The nange pair will have a different quality of the nange pair over there. Okay? But in the thought process, there is a frightening tendency within the players to slip into the comfort zones of its own class position. And there I think faculty plays a fairly significant role through instruction, mockery, forcing them to start thinking out of that box. The better plays that we have seen, so for me it would be Modoka Prachar. I think as someone who works in a trade union movement in Delhi, after he'd seen the play at IHC, so in other words at a venue which is already designed to flatter a certain kind of approach to a sweet, pretty, decorous space, asking me about one of the actors saying, tell me his background. And I tell him that his mother is a university teacher and his father is a doctor. And he says, really? And I said, why? He said, I wouldn't have dreamt that this boy, I thought he was somebody who is a working class background. And I said, what can be more flattering than that, to say that we did a play about a working class space and you couldn't pinpoint the actor's personal class location. The one thing that I feel generally about the players is they seem to take on the whole business of theatre making and all the various aspects of theatre making. They take them all on board. I mean, in class anyway, I saw that they took on not only translation, but they took on adaptation. And then they look at, when you adapt a play, then you have to look at where are you placing the play, who are the characters, where do these characters come from in specifically social terms, then what kind of dress, what kind of accent, what kind of background. And they don't leave all that work to the director. So sometimes they seem to work well in an ensemble situation. They pick material and they produce it in a way that you see the quality of attention in the audience when the players are performing is very different. You watch a players play, I think people are invigorated because something is going on, something is being created on stage. I think that's pretty special. और मैं थोड़ा आरएसएस सपोर्टर था उस टाइम पे, मतलब मुझे पता नहीं था कि आरएसएस होता क्या है, लेकिन एक सेंस था दिमाग के अंदर की क्योंकि वहाँ पे मतलब माहौल ऐसा था, मतलब घर वर पे कि सब लोग बीजेपी को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे ही एक सीनियर ने मुझसे एक दिन बोल दिया कि अच्छा यार तू बता, ये जो मोदी ने किया है वहाँ पर गुजरात में, क्या कहना है तेरा? मैंने कहा बहुत अच्छा किया यार मोदी ने। अब दूसरे दिन से मतलब लेनी शुरू हो गई। प्लेयर्स एज सच मुझे, मतलब अगर मैंने प्लेयर से कोई स्किल पाई है तो उससे ज़्यादा ये है कि एक मतलब नज़रिया मिला मुझे प्लेयर से, जीने का नज़रिया, ज़िंदगी का एक नज़रिया। बहुत मस्तीखोर लोग हैं प्लेयर्स में, बहुत हरामजादे लोग हैं प्लेयर्स में और बहुत मस्त लोग हैं। धीरे धीरे प्लेयर्स ने मेरी सोच खोली। पहले महीने में मुझे बहुत केवल से बात करने में इतना मज़ा आने लगा, बात के करने मतलब उसको सुनने में, बात नहीं करता था मैं, उससे डरता था और आज तक डरता हूँ केवल से। इसलिए नहीं कि वो डराता है, पता नहीं, लेकिन मैं इससे कभी हमेशा उससे बात करता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। तुम भी अपनी आवाज़ सुनाएंगे, आवाज़ सुनाओ। प्लीज जान में और जान है तो जहान, प्लीज। और मेरे को प्लीज सबसे अच्छा Theatre Society belongs to its students. It belongs secondarily to staff advisors. And finally, and somewhere in a distant memory, it belongs to college. I think that sense was there in our heads, and it was possibly built by Frank.
that we are an oasis in a desert. We are a little confined space with its own boundaries in a vacuum.